ladies amongst the crowd. Uh, Firstly, my sincere gratitude and thanks to all of you for finding the time and affording me this opportunity to express my thoughts. As I prepare to relinquish the command of one of the most elite formations of the Indian Army, I am sanguine that the situation here in Kashmir, in the valley, is peaceful and stable, and that the Chinar Corps over the last 16 months that I have been at the helm has strived hard to valiantly guard our borders, nix and negate numerous attempts at infiltration by inimical elements, while also simultaneously prosecuting a very robust and successful counter terrorist campaign within the Kashmir Valley. While doing this, we've also been very conscious and sensitive of our responsibility as part of nation building to maintain our connect with the Kashmiri people and the Awam. In this, as you are aware, we've initiated numerous programs and initiatives to make sure that we are always and at all times with the people of Kashmir. Today, as I am at the helm and shortly to leave, I realize that the region is at the cusp of a new beginning. We've seen over the last year and a half numerous significant events taking place here, and we've also seen a lot of development come to the region. In my view, this has been facilitated by a stable security situation brought about by very significant efforts that have been put in by the Chinar Corps and its sister agencies and organizations such as the Jammu and Kashmir Police, the CAPFs that are deployed here, and numerous other security agencies. So therefore, as I leave, I wish the Kashmiri people the very best, and I'm quite certain and confident that they will embrace the numerous opportunities that lie ahead of them. Thank you, and I'll now leave it open to all of you to throw your questions and queries at me. Yeah, ladies and gentlemen, Jose will be taking the question. As Agnivesh, sir, what's your take on it? So, as I see it, you're asking me two separate questions. One is first as to what is our biggest security challenge. I think, like I've said, the security situation in the state, as I see it, for the better part of the last 2 years, has been very peaceful and stable. So, therefore, if you look at all the parameters against which you weigh such a situation, they've all been down. You know, terrorism today is largely fueled from across the borders. I think that much is very clear. We haven't had any active recruitment as I see it over the last year and a half. The numbers last year were down to a dozen, I think, across the year, and this year, they're almost next to nil. So therefore, uh, if you see another violence parameters in terms of atrocities committed by terrorists, I think if you even look at the 4 or 5 incidents that we've had in the valley this year, softer targets have been picked where it's easy for even untrained personnel, maybe wielding a pistol or a smaller weapon to carry out such an atrocity. But the numbers are almost negligible. If you see terrorist initiated incidents
and I'm speaking within the valley, they've again been far and few in between. So therefore, now what is the challenge? The challenge is to be able to maintain this situation. In my view, Kashmir has had a good year, just as it did last year. But we need a few more good years like this for the peace to be enduring and lasting. And that, I feel, is the biggest challenge of the security forces, to be able to keep the situation the way it is today. About your second question, the recruitment of the Agniveers, I know a lot has been said and written about this. But, if you heard our Chief of Army Staff speaking, numerous other, veterans and other experts speaking, I think you need to give any initiative a little bit of time for it to mature and become better. And I think as far as the Agniveer recruitment scheme is concerned, it is at that stage where it is metamorphosing. And I'm quite certain, the way we've embraced numerous other initiatives in the past, that the armed forces will be able to make it successful. Yeah, please wait, please wait. Wait for the mic, wait for the mic. Please introduce yourself. Sir, as you said, the valley is becoming in a to normalcy. Sir, is there any chance or the army is thinking to pull out some troops from the valley? Look, like I said, we need a few more good years like the ones that we've had. 2024, 2023, I would say 2022 also amongst those. But I again want to say that for this peace to be enduring and lasting, we need to go through this process for a few more years. And therefore, whether it is the counter infiltration grid on the line of control or the counter terrorism grid that is deployed in the valley, it has to be maintained and sustained, because we are possibly in the consolidation phase. And therefore, in my view, no dilution of the grid is either recommended, and I definitely am not a proponent of that at this stage. Yeah, Irfan. Sir, Irfan Qureshi from TV9. Like you said, the security situation has improved in Kashmir Valley, and it is a challenge now to sustain it. So, what's your assessment as of now about the active terrorists in Kashmir Valley, especially? So, the official numbers which the multi agency committee has put out are approximately 80. And if you see, that's the lowest number in many years. When I came here last year, we were looking at numbers past the 100-figure mark. Now that figure has come down. Now, obviously, that figure is sustained by the perpetrators at a certain number, which is considered critical to sustain the terrorism ecosystem here. It has been the endeavor of the security forces to actively and aggressively bring these numbers down. And I think we've succeeded. Now the official figure is at 80. And I'm quite confident that the way we are going ahead, and we are prosecuting our operations in a manner where we are utilizing every wherewithal and means at our behest, I think these numbers will keep going down. So already at 80, we could be looking at an even lesser figure, maybe by the mid of next year. I'm keeping in mind that we're almost knocking at the doors of the winter. Yeah, Mr. Bandu. Sir, Arshid Rasool. Sir, what is the impact of army connected with the citizen in Kashmir? Please say that again. What is the impact of army connected with the citizen in Kashmir? Look, I said right at the outset
that we are very conscious of our responsibility as far as nation building is concerned. We premise our outreach to the Kashmiri people and the Awam on certain pillars. And let me spell these out. Now, the first one is education, the second is the youth, third is women, the fourth is promoting culture. So, if I was to quickly just run through each of these pillars, as far as education is concerned, you are aware that we've spearheaded many pioneering schemes. We've got 28 Army Goodwill schools that are spread across the valley. And I feel that through these, we can shape the personalities of young children and make them realize as to what is good for them, what are the opportunities that lie ahead of them, and how, they can realize these. You've heard of the JK SSS, where we sponsored as many as 900 students. We've invested about 37 crores over the last 3 years, and this will continue because most of these students are going to colleges and universities that have been carefully and deliberately identified and picked, and the students are in 4-year programs that they are attending. You heard of the Super 50, which trains and prepares students for stringent exams such as the NEET, IITs, and the IIMs. And we are providing them the wherewithal and the necessary preparation that can prepare them for the very, very tough competition that is obviously there in these exams. Speaking about the youth, I know there are challenges such as, ill influences. Let me put it like that. Uh, Drugs, I think that is a challenge that's staring us in the face. And these are areas that we are addressing. You know, uh, as an organization, we can do only as much. And sometimes I get the feeling that what we do is only like a little drop. But please remember that without that little drop, even the ocean would be a drop lesser. Women's empowerment. I know that young girls and women in Kashmir have aspirations like all other women in our country. And we are trying our best to make sure that some of these aspirations and opportunities are made aware to them so that they can realize them and they can give wings to their dreams. Sports and culture. You know that we are behind every sports initiative. We look for talent. We try and support them in the best way that we can. And you're aware that some of these children, youth from the region have gone and brought laurels to the country. And lastly, promoting culture. We are very conscious that this is a place where there is so much history and tradition and culture. So, whether it is showcasing to the people, you've heard of the recent inauguration by the Lieutenant Governor about the light and sound show at Bunyar. You the other day saw almost 10,000 girls getting together and setting a record in Baramulla. So these are small initiatives that we are taking, and that's primarily because we are aware of our responsibility towards nation building. And even as we move ahead, we shall remain committed to this and our connect with the people. Yeah, Asif, you had a question. सर मैं आसिफ न्यूज़ 24 से गुड आफ्टरनून सर एक आज तो पहली बार मौका मिला आपसे इंटरेक्शन का तो काफ़ी सारे सवाल हैं लेकिन थोड़ा सा हम कम डाउन करते हैं इसमें एक तो पहला कि जो हम यहाँ पे पीस देख रहे हैं कश्मीर वैली में तो एलओसी के उस पार पीओके में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वहाँ पे क्या टेररिस्ट का जो जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करना खासतौर पर कश्मीर वैली में क्या उसमें भी कोई चेंज आया है या वहां से कमी हुई है क्योंकि हम देख रहे हैं ज्यादातर आजकल एनकाउंटर्स या इन्फिल्ट्रेशन जम्मू में देखने को मिल रहे हैं क्या ये उस स्ट्रेटजिकल चेंज की वजह से थोड़ा सा कमी आई है या इंडियन आर्मी ने कंटिन्यूअसली यहाँ पे इतना अच्छा ग्रिड बना के रखा है कि इन्फिल्ट्रेशन को फॉइल किया जा रहा है और उनको यहाँ से चांस नहीं मिल रहा है आने का एक तो ये है सर दूसरा वी हैव सीन अटैक्स लाइक कोकरनाग लास्ट ईयर जैसे हुआ था उसके बाद कुलगाम में भी एक अटैक हुआ था तो there are reports and in certain sections we heard कि कुछ foreign terrorists हैं
जो कश्मीर में ऊपरी पहाड़ी इलाकों में है, अगर आपके पास कोई इस तरह का फिगर होगा कितने हैं, और वो एनकाउंटर्स भी हम नहीं देख रहे हैं कि जिसमें फॉरेन टेररिस्ट मारे जाए, तो वो क्या है कि मतलब अगर है ऊपरी इलाकों में किस वजह से चुप बैठे हुए हैं, या ये आर्मी की वजह से है कि उनको वहां पे रोक के रखा है? इस बारे में थोड़ा क्लेरिटी अगर आप कर पाए। तो आसिफ, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है कि इन्फिल्ट्रेशन और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम हुआ है पहले से, तो बेशक जैसे आपने कहा, यहाँ पे काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड स्ट्रांग है। आपको मालूम है कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम, जिसको हम फेंस भी कहते हैं, वो है, वो टेक्निकली एनेबल्ड है। और कई जो अटेम्प्ट्स हैं घुसपैठ के, उनको हमने नाकाम किया है। अगर आप लॉन्च पैड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार है, इस साल हमने देखा कि हालांकि इन लॉन्च पैड्स में लोग थे और हमें इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट्स भी आ रहे थे कि ये कोशिश करेंगे, लेकिन उतने अटेम्प्ट्स नहीं हुए इस समर में जब वो नॉर्मली होते हैं, जैसे कि हमने पिछले सालों में देखा। अब इसकी वजह क्या है? आपने बोला क्या स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। ये तो जाहिर है कि घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा दूसरी जगह से भी हो सकती है, और शायद इस साल हुई भी। और इसीलिए अगर आप देखें तो शायद जम्मू रीजन में नंबर्स कुछ बढ़ गए हैं, क्योंकि वो एरिया हमेशा से पीसफुल था। तो स्ट्रैटेजी चेंज शायद ये हुई है कि लॉन्च पैड्स में हम देख रहे थे, हमें लग रहा था कि यहां से इन्फिल्ट्रेट करेंगे, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें और शायद सक्सेसफुल कोशिशें कहीं और से हो रही थी। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो नंबर्स शायद थोड़े से बढ़ गए हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो नंबर्स भी जल्दी कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस हमें आने लग गई। दूसरा, आसिफ, आपने बात करी पिछले साल कोकरनाग वाले ऑपरेशन की। मैं सिर्फ इतना अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि वो एक अटैक नहीं था। आपको मालूम है कि उस ऑपरेशन में हमारे कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौंचक, डीएसपी हुमायूं भट्ट और सिपाही प्रदीप सिंह मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस। वो हमारा ऑपरेशन था। ये कई बार मैंने सुना है आप लोगों को बोलते हुए कि वो अटैक था, लेकिन मैं आज शायद एक आखिरी बार ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ऑपरेशन हमारा था। हमने सरप्राइज भी अचीव करी, लेकिन और कर्नल मनप्रीत और डीएसपी हुमायूं उस हाइड आउट तक ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। लेकिन आप लोग सब एक्सपीरियंस हैं, आपको मालूम है कि जब पहाड़ों में और जंगलों में ऑपरेशन होते हैं तो आपको पिन पॉइंट पता नहीं होता कि वो हाइड आउट एक्चुअली कहाँ है। दे हैड अचीव सरप्राइज। और हाउ? पूरी रात वो कॉलम्स चले थे, वो हाइड आउट सराउंड हो गया था, लेकिन लास्ट स्टेज में जब वो हाइड आउट के पास थे और वो आपस में मशवरा कर रहे थे कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो सकता है, उस समय में काफी फायरिंग हुई और उन चारों को गोली लगी। और वो टेरेन ऐसा था कि हमें उनको वहां से इवैक्यूएट करने में भी प्रॉब्लम हुई। क्या वो फॉरेन टेररिस्ट थे? आपको मालूम है कि उस ऑपरेशन में दो मरे भी। वन वाज अनआइडेंटिफाइड, वन वाज आइडेंटिफाइड एज अ लोकल। शायद एक दो बच के निकल भी गए हों। क्या वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे या जैसे आप बोल रहे हैं फॉरेन टेररिस्ट थे? वो कहना मुश्किल है। हाल ही में जो हमने ऑपरेशन देखे हैं उसमें पीर पंजाल के उस तरफ जम्मू रीजन में आई थिंक हमारे पास काफी संकेत हैं कि ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। यहां पर पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं मरे, ये मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि दो ऑपरेशंस में नॉर्थ कश्मीर में पाकिस्तानी टेररिस्ट भी मरे। इनके नंबर्स क्या हैं कहना थोड़ा मुश्किल है, बट दे कुड बी एनीथिंग फ्रॉम 25 to 40। ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है।
लेकिन अगर एक एरिया पीसफुल है, स्टेबल है, और उसमें सडनली इतने आप आतंकवादियों को ऐड कर दो, तो थोड़ा समय लगता है जो काउंटर टेररिस्ट ग्रिड है उसको मैच्योर होने। तो अभी वो ग्रिड को लगाया गया है, और जैसे कि मैंने बताया, अब उसमें इंटेलिजेंस उत्पन्न होनी शुरू हो गई, और आप देखेंगे कि आगे सक्सेसफुल ऑपरेशन भी होंगे। मुझे पूरा विश्वास है इसके बारे में। मैं शबीर फ्रॉम क्या हम कह सकते हैं जो वीर पंचाल में जो मतलब टेररिस्ट हैं वो कभी इस साइड में भी आते हैं, कोकरनाग, शुपियां, कुलगाम, एंड दे कैरी आउट एक्टिविटीज आर दे टेक शेल्टर। हाँ शबीर, ये तो जाहिर है कि ऐसा होता है। अगर आप किसी लेमैन से भी पूछेंगे तो जहां पे प्रेशर होगा वहां से वो आतंकवादी चले जाएगा। अगर आप एक जगह कोई इंसिडेंट करते हैं तो आप ज्यादा देर उस जगह में नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि आपके बारे में कोई खबर दे देगा, तो आप दूसरी जगह चले जाते हैं। और आप दूसरी जगह में जाके कोई इंडिकेशन या कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करते जिसकी वजह से आपकी लोकेशन रिवील हो जाए। तो मान लो अगर मैं शुपियां में कुछ करता हूं और फिर पीर पंजाल को पीर की गली से या एडजॉइनिंग एरिया से कहीं से भी क्रॉस करके पुंछ के इलाके में चले जाता हूं, तो ये तो जाहिर है कि मैं अगले 2-3 हफ्ते या 1 महीना चुपचाप बैठा रहूंगा। और ऐसे होता है, हमें खबर लग जाती है जब इस तरह की एक्टिविटी या मूवमेंट होती है, लेकिन कभी कभी इंटेलिजेंस थोड़ा लेट होती है या इतनी स्पेसिफिक नहीं होती कि उस पर एकदम अचानक ऑपरेशन हो जाए। लेकिन हाँ, जो आपने बोला दैट इज पॉसिबल, और वो हो भी है। Yeah, Irfan. Good afternoon, Jan Saab. Good afternoon. Hi, this is Hakeem Irfan Rashid from the Economic Times. So, Jan Saab, can you put a light on the February 2021 ceasefire? Is that